Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine and having good health. So today we are going to start for the lecture number 23. That is from chapter number 1. It is fundamentals of chemistry, and the topic that we are going to discuss it is the relationship between mole and a mass. So let's see what is the relationship between mole and mass. Mole and mass में relationship कौन सा हमारे पास given है? Let's see that. So mole and mass. The relationship between mole and mass can be expressed by using this formula. Now, what is the formula? Formula हमारे पास क्या है? And it is going to donate mole. ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है हमारे पास mole को. And it can be also abbreviated as MOL. That is mole. अब mole किसके इक्वल है हमारे पास? It is mass of substance in grams divided by the capital M is showing the molar mass. Molar mass. अब मोलर मास हमारे पास क्या है ये पहले ही हम लोग इस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं मोलर मास इट इज द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in the formula फॉर्मूला में हमारे पास जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मास का अगर हम लोग सम ले रहे हैं तो वो सम हमारे पास किसके इक्वल होगा मोलर मास के इक्वल होगा तो ये हमारे पास है मोल मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है वी हैव मोल एंड mass relationship मोल एंड mass relationship में हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं For example, mass of a substance in grams, it is equal to number of moles that can be write as N multiplied by we have molar mass that can be small m. So mass of substance or the number of moles are interrelated with each other. How we can write it? The formula of mole. Mole का formula जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है? Mole is equal to mass of substances in grams. It is divided by molar mass. तो मोलर मास और मोल एंड मास दे आर इंटररिलेटेड अब अगर हम लोग मोल्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास मास होना चाहिए एंड मोलर मास होना चाहिए एंड इफ वी वांट टू फाइंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई मोल्स विद द मोलर मास तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर mass. So this formula we can use to find the mass and this formula we can use to write the or find the number of moles of any substance. So let's have an example. The first one example we have calculate the gram molecule or the number of moles in 40 grams of H3PO4. Now किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है सो गिवन डाटा that we have in this numerical first thing we have mass of substance in gram तो mass हमारे पास है total 40 grams okay this is the mass second thing we know the formula of a substance तो formula हमारे पास है H3PO4 H3PO4 अब इस पे हमारे पास एप्लीकेबल क्या होगा उसके बाद आप लोग रिक्वायर्ड डाटा लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डाटा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा सो रिक्वायर्ड डाटा वी हैव नंबर ऑफ मोल्स वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने मोल्स फाइंड करना है तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए मोल्स किसके इक्वल है मोल्स इज इक्वल टू mass of substance in grams divided by molar mass molar mass अब mass in gram हमारे पास है but we don't have molar mass so first of all we will find the molar mass of H3PO4 as sum of atomic masses of all the atoms present in the formula unit तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से atoms present है hydrogen phosphorus and oxygen the mass number of one atom of hydrogen is 1 multiply it with 3 because there are total 3 atoms of hydrogen next we have phosphorus. Its mass number is 31. After that, we have
oxygen. Oxygen, its mass number is 16. Multiply it with 4. We will get their sum up 3 plus 31 plus 16 multiplied by 4, we will get 64. So its sum up will be equal to 3 3s are 6 and 4, we will get 4, 1 and 3, 5, 6, 7, 8 and 3 and 6 we will get 9. So 98 atomic mass unit is just the molar mass of H3PO4. Now we will apply the formula, or we can also write it as solution. सो हमारे पास सबसे पहले आएंगे मोल्स. इट इज इक्वल टू mass in gram. तो mass in gram जो हमारे पास गिवन है इट इज 40 grams divided by molar mass. Molar mass we have 98. सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग मोलर मास फाइंड कर सकेंगे, और मोलर मास को इजी जो वे है हमारे पास फाइंड करने का वो ये है 40 grams divided by 98, we will get 0.40. We will get 0.4081 moles. It's mean if we have 40 grams of H3PO4, it is having 0.4081 moles of its substance. So this is the easy way to find the number of moles. So this we have for today's lecture. I hope you guys understand that how we can find the number of moles in a substance. And if you have any queries, you can ask me about that in the next session. Allah Hafiz.